सात्वी अभी मत लिखो, मेरा पहले सुन लो फिर मैं तुम्हें लिखाऊंगी, पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना, लिखा हुआ तो सब बुक्स में मिल जाएगा। अब देखो क्या होता है, सपोज इफ आई से राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल स्टडीज इन क्लास 5th, Rahul is always eating junk food. Yes, suppose if I am writing like this, then what is happening is that this word Rahul, Rahul, Rahul is getting repeated again and again. Yes? So this is spoiling the beauty of our language. Yes, what happens is कि हम बार बार देखो बोले राम जा रहा था, राम खा रहा था, राम उठ रहा था, राम कूद रहा था, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर आप हिंदी में सर्वनाम लगाना स्टार्ट कर देते हो, तो वैसे ही हम इंग्लिश में प्रोनाउंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। सो द स्पीच विल बिकम मोर इफेक्टिव इफ आई से राहुल इज अ गुड बॉय, एंड नाउ एज राहुल इज अ बॉय व्हाट इट विल बी, ही studies in class 5th and he is always eating junk food. So in this way the words that replace the noun are known as pronouns. What are pronouns? The words that replace the noun, यानी noun के जगह पर जिन words का हम use करते हैं, they become the pronouns. Now pronouns are of 6-7 types. Are you aware how many types of pronouns आप पढ़े हैं कभी? Yes? Yes, ma'am. Yes? Okay. Now these pronouns, चलो, instead of coming to the types, first let me tell you that these pronouns are further classified into first person, second person and third person. Yes, what are they classified into? First person, second person, third person. Okay. Can any one of you tell me who is the first person? Which pronoun falls under the category of first person? I, me. I and we. Not me. I and we. Which is the second person? You. You and yours. And which is the third person? He, she, it, they. Yes. So these are your pronouns categorization on the basis of first person, second person and third person. Now you just write what are pronouns. Pronouns लिखो और उसके सामने लिखो the words used in place of a noun. They are classified as in the same way you draw it. Classified as के बाद Classified as ये first person, second person, third person. ये ऐसे बना लो और लिखो. Yes? Yes. Everybody has written? Yes. Few of them are writing. Let us wait for them to write and complete. Write a little fast, all of you. Now these are how they were classified. Now we are moving towards the types of pronouns. What are we moving towards? Types
Now these types of pronouns are, first, that is the personal pronoun. What are they? Personal pronouns. Like is when I'm talking about I, me. All these which are talking about themselves, और उनके बारे में ही बात हो रही होती है. जो बोल रहा होता है वो अपने बारे में ही बात कर रहा होता है. They are known as personal pronoun. He is talking to himself. Then he also becomes the personal pronoun. That I'll make a chart later on, in which I will give you personal pronouns for each का possessive और each के बाकी जो भी उसकी categories हैं वो सारी मैं एक chart सा बनवा दूँगी. I've got it in my phone. I'll look at it and I'll make it from there. Now then comes after the personal pronouns is possessive pronouns. What are they? Possessive pronouns. जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरा है. Yes. So possessive means it is talking about mine. This is my pencil box. This book is mine. So what are these possessive pronouns which are telling about my, mine or possession? His, hers, our, ours, ये सारे इसी के अंदर आएंगे. ऐसे ही आएगा इसमें भी, पर्सनल में भी he, she, it सब पर्सनल प्रोनाउंस हो जाते हैं. उसके बाद उन्हीं के रेलेवेंट पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे आई का क्या पोजेसिव हो जाएगा? मी, माइन. सिमिलरली इफ आई गो इन फॉर ही, देन उसका हो जाएगा हिज. सो व्हाट डज पोजेसिव प्रोनाउंस टेल्स अस अबाउट? इट टेल्स अस अबाउट द पोजेशन. यानी ये चीज मेरी है, ये उसकी है, तो वो चीज क्या हो जाती है? वो पोजेसिव प्रोनाउंस हो जाती है. अब इसके बाद हमारा प्रोनाउन आता है reflexive pronoun. What is it? Reflexive pronoun. Now reflexive pronouns are those pronouns जो कि बताते हैं कि जो doer है, यानी जो subject है, the one who's talking about it, she can do it herself. How is it? Like they are always in the form of myself, herself, itself. So wait, I'll explain it with the help of example. How it happens is that she can handle the situation herself. So what is the subject over here? What is the person whom we are talking about? She. She is the doer. करता कौन है? काम कौन कर रहा है? She कर रही है. और उस काम का असर किस पे हो रहा है? उसी पे हो रहा है. तो in this situation what does it becomes? It becomes a reflexive pronoun. समझ में आ रहा है? Possessive वाला, personal वाला मैं, possessive वाला मेरा, और ये वाला हमारा, मेरा मुझी से. यस, कि उसका काम वो खुद ही कर सकती है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है. एट दिस पॉइंट इट बिकम्स अ रिफ्लेक्सिव. ये स्पेलिंग गलत हो गई. रिफ्लेक्सिव, CID, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्लियर? तीनों क्लियर हो रहे हैं? लिख लो ये, फिर मैं इसको रब करके बाकी तीनों बताऊंगी. After this reflexive is intensive. What is it? Intensive pronouns. ये भी वही pronouns होते हैं. They are also the same pronouns as yourself, myself, etc. They are also, but how do we identify that it is intensive and how do we identify that it is reflexive? In simple sense,
रिफ्लेक्सिव वाले जो थे वो सेंटेंस के एंड में आते हैं. आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा माई सेल्फ लास्ट में आया था ना. शी कैन हैंडल द सिचुएशन हर सेल्फ. So they come at the end of the sentence, whereas intensive ones are just after the subject. That is, उसमें आगे के सेंटेंस से हमें कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हमें किस चीज पे एम्फेसिस देनी होती कि you yourself have committed अब हमें इस टाइप के सेंटेंस में क्या होता है कि हमें सेंटेंस की ज्यादा जरूरत नहीं है. सेंटेंस की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एम्फेसिस किस पे देना है कि उसने खुद ही गलती करी है. यस, यू योरसेल्फ यू हैव डन इट. तो हमें जब उस पे एम्फेसिस देना होता है तो हम इसको इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं. दैट इज, इट इज डन टू इंटेंसिफाई द इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट. हमें इसमें किस पे एम्फेसिस देनी है कि जो यू है, यू ने खुद ब खुद ही वो काम किया है ना. सो इस केस में ये इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाता है. जैसे ही वो सब्जेक्ट के बाद में आता है, ही हिमसेल्फ रैन अवे. यस, वो खुद ब खुद ही भाग गया था, हमने थोड़ा ना कहा था उससे भाग जाओ. ऐसे ही जब ये वाला होता है तो ये एग्जैक्टली सब्जेक्ट के बाद आता है, और इसमें सब्जेक्ट के पीछे की हमें ज्यादा अहमियत नहीं होती है. हमें ये जस्टिफाई करना होता है कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, तब हम इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज करते हैं. वेयरएज इन रिफ्लेक्सिव, व्हिच आई टोल्ड यू अ लिटिल बिफोर, in that case how do we differentiate? That in that these self words are always coming towards the end of the sentence. Clear? Understanding what are these two differences? Yes, ma'am. Now the next one comes is demonstrative. What are these pronouns? Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns को हम कैसे कह सकते हैं? Like they tell us about the position or the one who does it. This, that, those, these, all these words are falling under the category of demonstrative. This, that, those, these, all these are demonstrative pronouns. Like this book is mine. तो इसमें this क्या होगा? नहीं होगा. इसमें this adjective होगा, mine pronoun होगा. ठीक है, यही हम लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं. लेकिन अगर ये सेंटेंस आता है the boy that is sitting at the last is talking, तो यहाँ पर दैट क्या आ जाएगा? वो प्रोनाउन हो जाएगा. ये अब कल तुम लोग कंफ्यूज हो गए जब मैं तुम लोग को एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगी. कहीं कहीं ये वर्ड्स एज प्रोनाउन रोल प्ले करते हैं, वेयरएज कहीं कहीं ये एज एडजेक्टिव्स रोल प्ले करते हैं. तो दे आर बोथ एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ऑल्सो, but their role I'll clear it tomorrow. For today what you will have to learn is the demonstrative pronouns are this, that, those, these. Clear? These apples are ripe. So over here it is a pronoun. Okay? That book is mine. It is an adjective over there. Clear? तो ये confusing है थोड़ा, लेकिन तुम लोग बस इतना समझो कि this, that, those, these वाले जो words होते हैं they are demonstrative pronouns. Now after this demonstrative we have the next category which is the last one. Can anyone tell me कौन सा होगा? कोई idea? नहीं? No. So it is interrogative. Question वाले. Question words हमने पढ़े? कौन से होते हैं question words? What, Why, how, where, so, who, whom, whose, which, all these words when playing the role of pronoun become an interrogative pronoun. Clear?
थोड़ा थोड़ा आया समझ कि पूरा पूरा आ गया? थोड़ा थोड़ा आया? फिर से बताते हैं। अभी एक बार तुम लोग लिख लो, अब उसके बाद आई विल जस्ट टेल यू। Come on, now tell me what are pronouns? The words used in a place of noun. Yes, the words that are used in place of nouns. Then, how are they categorized as? First person, second person, third person. ये तो क्लियर है सबको? Yes. उसके बाद आए टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में। तुम लोग हिंदी में सर्वनाम पढ़ते हो? Yes. है ना? तो सर्वनाम भी इतने ही टाइप्स के होते हैं अगर आपको याद हो तो। Yes. So in the same way in English also we have 6 types of pronouns. First is personal pronoun, that is I, me, he, she, it, सारा। वो मैं अभी चार्ट लिखाती हूँ तुम लोगों को। उसी के रेलेवेंट पोजेसिव प्रोनाउंस हो जाते हैं, यानी कि जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि he is holding his book in the hat. Suppose the sentence is he is holding his pencil box. Yes. So what is this? He is the personal pronoun and his is the possessive pronoun. Very good. देखो क्लियर तो हो गया सारा तुम लोगों को? Yes. So what is it? It becomes possessive pronoun. Clear? Yes. Now similarly, if we move to the next one, that is रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको बताया जिसमें लास्ट में आ जाता है यू विल बी गोइंग टू द मार्केट योरसेल्फ। जब लास्ट में आ जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जब साथ साथ आ जाएंगे तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। जब दिस दैट दोज वाले वर्ड्स आएंगे और ये शुरू में आएंगे सेंटेंस के और उसके पीछे कोई भी नाउन नहीं होगा, जैसे दीज नाउन तो होगा दीज मैंगोज आर राइट। अब देखो दिस इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट, बट इफ आई टेल यू दिस बुक इज माइन, यहाँ पर दीज मैंगोज आर राइप, इट इज टेलिंग अबाउट द सिचुएशन कि यहाँ पर ये जो मैंगोज पड़े हैं ये राइप है। तो इस केस में ये जो होता है ये प्रोनाउन हो जाता है। और जब अगर पीछे इसके प्रोनाउन लग जाता है, वर्ब नहीं है और नाउन लगा होता है, प्रोनाउन लगा होता है, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर? Yes. Understanding that you have to see that if there is a verb or if there is a pronoun in the end, then it becomes an adjective. Clear? जब उसके पीछे कोई verb है या कोई और preposition है तो what it will be? It will be as a pronoun. This is how do we distinguish between the two. Clear? Now next comes your interrogative. Who is talking in the class? So over here it becomes a interrogative pronoun. अब तुम लोग को एक चार्ट मुझे बनवाना है, वो चार्ट तुम लोग बनाओगे तो it will be clear to you. May I take out my phone for that chart?
तो कुछ नहीं है, ब्लैक बहुत अच्छा है। नहीं सर, वो थोड़ा सा किसी किसी चौक में प्रॉब्लम आता है, दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा, जस्ट रिमाइंड मी अबाउट सिंगुलर प्लूरल इफ इट इज आउट ऑफ माय माइंड, ओके? कि मैम सिंगुलर में कैसे यूज करना है, प्लूरल में कैसे यूज करना है। Now see, written all of you, write it. Now, where to use and where it will be followed by a singular, and the other thing which we have in this is the concept of has and have. ये आपको क्लास 10th में एडिशन ओमिटिंग, आप लोग एडिटिंग ओमिटिंग करते हैं सब लोग? Yes, omission and addition. Find out the grammatical error in the sentence. All these exercises are there. Yes. So in this case it will help you. Now who can tell me where do we use has? जो थर्ड पर्सन के साथ जो सिंगुलर है उसके साथ हैज, और बाकी जो प्लूरल है उसके साथ हैव, बट आई और ही के साथ हैव. Very good. She's very nice. Give her a big clap. So what it is that whenever we are, now you all know. देखो I, me and you. Whenever it is I and you, forget about me in this case. Whenever it is I and you, we always use have. I have. You have. We will never write has. And when we are talking about, I'm removing this, him, her, and whenever we are talking about he, she, it, then we will always have has. We will always be using it with has. She has a pencil. She never have. Okay, she has a pencil, he has a pencil, it has been or it has rained, whatever it is. Okay, so always whenever there is he, it has, whenever there is she, it has, और I और you के साथ हम हमेशा have लगाते हैं और कभी भी has नहीं आएगा.
And similarly, when we are talking about we and they, in this case, what do we use? Have. Why? And what is the concept behind this? That whenever we are talking about a singular thing, the verb is always used. These are the helping verbs. Has, have, is, am, are. What are these? These are helping verb or auxiliaries we say. In general we say helping verb. अगर उसको और complicate कर दो तो वो क्या हो जाती हैं? Auxiliaries. So whenever it is singular, then we have has over there, and whenever it is I, we have over there, and whenever it is we, they, it is always followed by have. Clear? Now any other thing? Sir, अभी इनको वो worksheet करा दें या बाद में, because the topic is all done. अब या तो मैं sample questions दूँ उन लोगों को करने के लिए, तो वही होगा. तो वही मैं अपनी मेल से खोल के वही वर्कशीट के लिखा मेल पे है ना, मेल पे तो मैं वहाँ से खोल के दे दूँ. मैं मेल खोल के यहाँ पे लिख दूँ. अगर हो गया टाइम तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक छोटे होते हैं तो 45 मिनट से ज़्यादा इनको खींच पाना बहुत मुश्किल है. बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई नीडेड. मुझे तो ठीक है, काफ़ी ठीक है. Okay children, sir will give you worksheet if it is possible, then you solve the worksheet, otherwise we will practice it. Tomorrow I will be taking up adjectives. कल दोनों वर्कशीट में ना भी I will try to find out the print out of that, then we'll see. Right? Okay.